Hello students, so in this video we will talk about the dimension and units of work. This is the subtopic of the chapter work energy power. तो जैसे कि हमें बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क डन से पता है कि वर्क डन इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो वी कैन राइट दैट W इज इक्वल टू जस्ट F डॉट S. तो वर्क डन का डायमेंशन क्या होगा? दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स का डायमेंशन है ml टी टू द पावर -2 एंड डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है जस्ट लेंथ. So the dimension of work done is ml squared into t to the power -2. Now units of work, हम बेसिकली दो तरीके की यूनिट डिफाइन करेंगे यहाँ पे. फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट यूनिट एंड द सेकंड वन इज ग्रेविटेशनल यूनिट. सो हाउ टू डिफाइन दैट? एब्सोल्यूट यूनिट जो है, एब्सोल्यूट यूनिट इन SI है जूल, जिसको हम J से डिफाइन करते हैं. तो कैसे हम लोग जूल को डिफाइन करेंगे? जूल को हम लोग डिफाइन करेंगे, लेट अस से हम लोगों को अगर इसको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करें यूनिट को? सो एज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. लेट अस से कि अगर मैंने एक F फोर्स अप्लाई किया है एंड ड्यू टू दैट F फोर्स S डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो F into S is the work done. So work done is said to be 1 joule when we are applying 1 Newton force, and due to this 1 Newton force we are having 1 meter displacement. So 1 joule is nothing but Newton into meter. So what is the CGS unit? CGS unit is arc. अभी भी हम लोग यूनिट एब्सोल्यूट यूनिट की बात करें तो आर्क को कैसे डिफाइन करें? Work done is said to be 1 arc when 1 dyne force is applied on a body, and due to this force the body is displaced through 1 centimeter. So 1 arc can be written as 1 dyne into 1 centimeter. So what is the basic relation in between joule and arc? So 1 joule can be written as 10 to the power 7 arc. So this is the basic relation that we need to remember. Now what about the gravitational unit? Gravitational unit means हम लोग इसको kg weight ऐसे लिखेंगे. So gravitational unit can be written as kgm. So 1 kgm of work is said to be done when a force of 1 kg weight displaces a body by 1 meter in its own direction. So 1 kgm can be written as 1 kg weight into 1 meter. So इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 kg weight means 9.81 Newton into 1 meter. That means 9.81 Newton meter, or we can say it is 9.81 joule. So this is the SI unit. Similarly, we do have CGS unit as well. For gravitational unit, वो क्या है? वो है 1 ग्राम सेंटीमीटर. तो 1 ग्राम सेंटीमीटर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? 1 ग्राम सेंटीमीटर ऑफ द वर्क इज डिफाइंड एज, जब आप जो बॉडी को डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहे हो, दैट वेट्स 1 ग्राम वेट, और ड्यू टू दिस फोर्स you are moving by a distance 1 centimeter in the same direction. So this is 1 gram weight into 1 centimeter. So 1 gram weight can be written as 981 dyne into 1 centimeter. So this is 981 dyne centimeter or arc. So this is everything you need to know about the dimension and unit of work.